main excitation is coming from the this permanent magnet generator. It is a permanent magnet generator. Permanent magnet means north pole and south. It is permanent magnet. So when north and south is rotating, there is a EMF here, and this is converted from AC to DC with the help of here. These are not diodes, these are thyristors. Just to have the some changes, it is like these are the thyristors. So from this, it is converted to your DC. So your DC field current is here. It means now so there are nowhere there are roaches. Since it is permanent magnet, it produces the field here. This is field is implied here and here. Here it is a rectifier, DC rectifier, and finally we get this. Now to control the voltage, suppose voltage is not 1 per unit. So this voltage is measured from here with the help of potential transformer. It is compared with the reference. It can be more than 1 or less than 1 per unit. So the error signal will come here. This error signal. According to this, there is firing control unit. So the firing control of this thyristor, firing angle of thyristors are changed so as to maintain this field current. When the field current will be changed, the output voltage of this will be changed. When the output voltage of this will be changed, the main field current will change, and accordingly the terminal voltage will change. Now you see here, this is rotatory, this is rotatory, this is rotatory. Everything is rotatory here, but there is no courses, neither slip ring nor commutators are there. Now what will be the problem? In this case, say they are connected to the same shaft. Here, say for example, this is the shaft. Here, this is a rotor of the main. Here, rotor is the rotor of the generator. Here, rotor is the main or main exciter. Here, rotor is the rotor of pilot exciter. And they are rotating. All are rotating with the same speed. If they are rotating like this, it means देखिए ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है. So it means when this is rotating, it means this must also to rotate. ये जो हमारा rectifier है, rectifier is connected on the shaft. With the help of the shaft, rectifier is also rotating. तो इस वजह से प्रोसेस की जरूरत नहीं है. रेक्टिफायर भी रोटेट कर रहा है और वो शाफ्ट पर कनेक्टेड है कंटिन्यूसली टू गिव द सप्लाई. Now there are chances that the shaft is not like this. When this shaft, the length of shaft is very big, it is not like this. It can be of say 20 meters, 10 meters, 20 meters, 100 meters. In case of a big generator, the shaft can be very high, length can be very too long. Then it may happen because of the twist, because of the torque available in the shaft, there can be twist in the shaft. Twist means here there can be angle 0 degree, but here it can be 5 degree. So there can be twist in the shaft. So because of the twist in the shaft, what may happen is, if this is tightly, these are the conductors. If they are tightly coupled, then they can break. That's why these wires are kept slightly loose, so that if 10 degree, 5 degree or 20 degree movement takes place, then these conductors or these wires will not break. Okay, that's why in this way the working of the pushless excitation takes place. Is there any question up to now? यहाँ तो किसी कुछ पूछना है? So excitation system we have described. Okay, excitation system we have described, and it is not only the excitation system which controls the reactive power. How the excitation controls the voltage? By controlling the reactive power. By making it over excited and under excitation, they control the reactive power. In this way, by controlling the reactive power, by making the reactive power injected or reactive power supplied, making it equal to the reactive power demanded, they control the voltage. Now, it is not the only generator for excitation system which supply the reactive power. There are other devices also which supply the reactive power. So to maintain the constant voltage, there is responsibility of some other devices also. Say for example, there can be capacitors, shunt capacitors, there can be STATCOM, there can be UPFC. There are various fact devices which can be used to control the reactive power of the system. So we will take one or two out of them. So these are the method of voltage control. Shunt compensation, series compensation, excitation control, tape changing transformer, booster transformer, induction regulators.
So these are the various methods by which we can control the terminal voltage of the system also. First of all, we will take this. This is the shunt excitation. Okay. So how to control this? Here you see, this is in the beginning. See, this is not there. Shunt compensation is not there. Here the shunt compensation is not there. This is the sending end voltage V1. This is the receiving end voltage V2. And depending upon the load connected here, depending upon the load, the I2 current will flow. What will be I2? Depending upon I2 कितना होगा? Voltage here divide voltage here, or depending upon this value of your load, here will be the current. Now, if we draw the phasor diagram, first of all, forget this. You don't consider this. Here, this capacitor is not there. Only the V1, R plus JX and load is there. Then what will be the phasor diagram? इसका phasor diagram क्या होगा? This V1 will be equal to, suppose this is R2 plus JX2, or I2, some I2 is there. I2 current is I2, and depending upon the load, there will be some power factor angle of current. If जो लोड है उसका पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली द करंट विल बी लैगिंग और लीडिंग. से करंट इज लैगिंग बाय एंगल ऑफ फाई. So current is I2 cos phi2. I2 and phi2. Phi2 is the angle of this. So what will be this V1 and relation between V1 and V2? What is the relation? यहाँ इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? यहाँ V1 है, ये V2 है, ये R plus JX है, ये I2 है. And angle of I2 is phi2 depending upon the load. So what will be the equation? कौन बताएगा? What will be the relation between V1, V2 and I2 and R plus JX? इसमें क्या इक्वेशन क्या बनेगी? It is simple circuit, series circuit. V1 is equal to V1 is equal to V2 plus I2 and R plus JX. So if you draw the phasor diagram of पीछे बोला पीछे दिखाने दो जब मैं स्लाइड ऊपर करूँ. Again forget this. ये पोर्शन आप अगर छोड़ दें तो it is V2. Okay. So sorry, forget this. It is a V2 and V2 plus I2 R2. That's all. This is I2. I2 is the current, is the phasor angle of I2. So it is I2 R2. I2 R2. Okay. And JIX is this. JIX is this and this is V1. Is this clear or not? So initially current is this. Initial current is this I2. I2 is the angle of I2. So I2 R2 is this and J time IX will be this. And this is the voltage. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? Now you see. स्लाइड Now what we are doing? We are connecting this capacitor here. We are connecting the capacitor here. What this capacitor will do? The current of this will be lagging or leading. It will take. It is a lagging current. We know lagging क्यों है? Because of the nature of the load. Nature of load is mostly lagging, so we consider it is lagging. So it is a lagging current, but capacitor is always taking the. कैसा lagging या leading? करंट कैसा कंज्यूम करता है? लैगिंग और लीडिंग कैपेसिटर. So current flowing into this will be the leading current. Now again come to the phasor diagram. Come to the phasor diagram here. अरे माइक दे दे भाई. Current in the capacitor. Is it clear or not? Why we have considered current in the capacitor in this direction? Because this is 90 degree एक साइड नहीं जाते सही बात है. voltage के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन में यही करंट होगी कि नहीं होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लियर और नॉट? So it is the direction of current in the capacitor. So net current now modified current क्या हो जाएगी? This is the previous current flowing I2. This is the previous current flowing into capacitor in the load is I2. This is the current flowing into the capacitor. So net current will be the sum of I2 plus IC is equal to I. Okay? अब net current हमारी ये flow करेगी. जो लोड के अंदर करंट I2 था उसमें IC करंट और जा रही है कैपेसिटर में. So net current flowing from the system from the generator side it is the I2 plus IC is equal to I. अब net current हमारी I हो गई. That's why we have considered this was the I2. This is the IC. This is the final current, so it is I.
Now what will be the phasor diagram? अब क्या होगा? What will be the phasor diagram? Now current is this I. Now this is the new current I. So what will be I into R? Because now the load is the sum of the two. दोनों के मिलाकर हमारा लोड बन गया. Capacitor as well as the actual load connected. So now what will be I into R? This is a lagging current I. So I into R will be now. I into R will be this or not? Same direction में. This is the direction I into R. In this direction there will be the I into R. Okay. And perpendicular to this there will be I into X. Perpendicular to the I into X. Okay. So because net voltage is again. नेट वोल्टेज तो हमारा V1 है तो V1 ही है जितना इनपुट वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज है. सो दिस V2 प्लस दिस एंड नेट V1 विल बी दिस. इसका मतलब क्या हुआ? पहले बराबर वोल्टेज V2 डैश था, अभी वोल्टेज V2 हो गया. वोल्टेज इंप्रूव कर गया बिकॉज ऑफ द शंट कैपेसिटर कनेक्टेड. दिस इज द फेसर डायग्राम. नाउ वी विल सी द इक्वेशंस फॉर दिस. अब इसके इक्वेशंस को देखें. You see, V1 is equal to V2 plus IR cos phi 3 IX. It is clear or not? With this equation. इस फिगर में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये V2 और ये V2 plus I ये phi 3 है. तो इसका डायरेक्शनल कंपोनेंट IR cos phi 3 यहाँ तक हो गया और इसका इस डायरेक्शन में यहाँ तक कंपोनेंट ये यहाँ तक करेंगे. ये तो व्हाट विल बी दिस? ये IX है ये, तो ये IX sin phi हो गया. ठीक है कि नहीं? ये phi 3 है, ये 90 डिग्री है. तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इस डायरेक्शन में cos phi होगा, इस डायरेक्शन में sin phi होगा. तो यू सी net equation will be now IR cos phi 3 plus IX sin phi 3. इसमें किसी को डाउट होगा पूछ लेना. Now this I cos phi 3 और I2 cos phi 2. अगर see this यार ये फिर वहीं आ जा. ये I2 का इधर कंपोनेंट, इसका I2 इसका यह कंपोनेंट I2 cos phi 2 होगा और यही I cos phi 3 होगा. हुआ कि नहीं हुआ? I cos phi 3 और I2 cos phi 2 सेम. ठीक है कि नहीं है? क्योंकि हमारा करंट ये वाली करंट चेंज हुई है 90 डिग्री. ये करंट सर स्लाइड कर रहे इतना. So this horizontal component of this current is same. So I2 cos phi 2 is equal to I cos phi 3. Okay. Now ये देखो यहाँ इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? I2 sin phi ये वाला कंपोनेंट. इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? I2 cos phi 2. पता लग जाएगा. I2 cos phi 2 minus IC. जल्दी लग रही है हमसे. गंदी कुछ ना मत माइनस IC. दिखा बढ़ते थे तो नहीं रही. I sin phi 3. गंदी दिखा खड़ी थी. ठीक है कि नहीं? बस I sin ये I है और इसका ये वाला कंपोनेंट दिखा है. तो एक बार यहाँ से लेके ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? I sin phi 3. ब्लैक जरा आप ले आओ करके. उधर ब्रेक कर दो भाई तुम. उधर तो ब्रेक ही करना. यार फिर सर स्लाइड कर देते हैं. I sin phi 3 is equal to I2 sin phi 2 minus IC. ओके. इसकी वैल्यू अपने इसके अंदर लिखा ना. IR cos phi 3 in place of IR cos phi 3 we have I cos phi 3. Okay. And in place of I sin phi 3 we have this. So this is the equation. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इस इक्वेशन में V2 को मल्टीप्लाई कर दिया, V2 को डिवाइड कर दिया एंड V2 I2 cos phi 2. V2 I2 cos phi 2 क्या हुआ? इनिशियल पावर एक्टिव पावर P2 और V2 I2 sin phi 2 ये क्या हुआ? इनिशियल पावर Q2. जो हमारा कैपिटल लगाने से पहले जो पावर था वो P2 और Q2 और ये क्या है? माइनस V2 IC. V2 is the voltage
across the capacitor, or IC is the current leading current flowing into that. So V2 IC is the reactive power X this. तो अब यहाँ से देखिए क्या पता लग रहा है. This is the V1 minus V2. This is the voltage regulation. V1 minus V2 क्या है? दोनों में difference. V1 minus V2 is equal to voltage regulation. So this is V1 minus V2. Now this what is R? If we consider resistance R, what is R? R is the total resistance of the transmission line. What is the X? X क्या है? Total reactance of the transmission line. If we consider resistance per unit length of the transmission line is R, small r is equal to total resistance per unit length of the line. So what is the capital R? Capital R क्या होगा? हाँ भाई. गोविंद खुद ही मार दूं साढ़े की. दोनों क्या है भाई? तो कैमरा क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? What is the question? Capital R क्या होगा? हाँ, capital R और small r में relation. कैमरे में सुनिए. आपसे सुन नहीं रहे हो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, हम 3 क्लास के बच्चे सुनोगे अभी पता लग जाएगा. सुनो. Resistance per unit length is small r. R is the total resistance. What is the relation between capital R and small r? Resistance per unit length is small r, और total resistance of the line is capital R. So capital R small r में क्या relation होगा? Small r is equal to capital R by L. Small r is equal to capital R by L. Yes. माइक दे माइक मोहित once more. ठीक है. इसलिए capital R is equal to Small r is equal to capital R by L. और capital R is equal to yes. Different element. आगे समझ में? Capital R is equal to yes. Capital R is equal to small r into L. ठीक है? तो ये जो है ना capital R. Now please see. Capital R. सिंपल बात भी नहीं बता रहे हो ना, इसका मतलब सुन नहीं रहे हो. यहाँ से सुन नहीं रहे हो तो समझोगे कैसे थे आप. प्लीज मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ माइंड हियर. देखिए अब यहाँ पे ये V1 minus V2, so V2 is equal to V1 minus this, ये लिखा है. V2 is equal to V1 minus this portion. V2 is equal to V1 minus this portion, and in place of capital R, small r into L, in place of capital X, small x into L. Okay? This is small x. So now you see, we want, हमारा पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? चल वोल्टेज थ्रू आउट हमारा सेम रहना चाहिए. सेम रहना चाहिए इसका मतलब क्या है? 1 पर यूनिट रहना चाहिए. सेंडिंग एंड पे जो वोल्टेज है वही हमारा रिसीविंग की वोल्टेज हो. तो इसका मतलब क्या होगा? V1 will be equal to V2. V1 should be equal to V2. And not only that, V1 यहाँ है, V2 यहाँ है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक धीमे धीमे वोल्टेज ड्रॉप हुआ था. वी वांट वोल्टेज यहाँ V1 है, यहाँ भी V1 हो, यहाँ भी V1 हो, यहाँ भी V1 हो, यहाँ भी हो, टर्मिनल पे V1. और पर्पज क्या है? थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इट इज बेटर इफ द वोल्टेज इज नॉट पर यूनिट. ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? थ्रू आउट द V1 and V2 should be equal. ये कब होगा? when this is 0. Okay, when this is 0 it means now this is 0. And this is 0, it means L cancel, this is 0. And what is from here? If you solve this, R by X V2 and this comes. इसका मतलब क्या हुआ? This is the formula. ये क्या बता रहा है? QC, reactive power leading reactive power consumed by the capacitor should be equal to R by X. R क्या है? What is R? Resistance per unit length of the line. और X क्या है? Reactance per unit. R by X is the constant. जितना भी होगा रेजिस्टेंस per unit length, reactance per unit length is constant. So this is a constant value. And P2 plus Q2 इसके बराबर रेजिस्टेंस नॉर्मली अगर 0 मान लें
तो QC should be equal to Q2. जितना Q2 डिमांड है, अगर QC से फुलफिल हो जाए तो रजिस्टेंस परमिट हो जाएगा। अदरवाइज इसके अकॉर्डिंगली अगर Q2 भी है कुछ तो इस रेशियो के अकॉर्डिंगली आपका QC होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस शुड सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंस पावर। इफ द कैपेसिटर इज एबल टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, then voltage of the sending end and voltage of the throughout the transmission line will be कितना होगा? Yes. वही तो यस सर। हाँ, क्या सर? अगर QC capital, if the capital supply this much amount of reactive power, depending on Q2 is the load and this is changing. Q2 और Q2 is the load which is continuously changing because it is in the hand of the consumer. और capital इतना power supply कर रहा है, तो if this condition satisfy, capital supply this much amount of reactive power, feeding reactive power equal to this, then what will be the voltage of the system? हाँ, मतलब कैपिटल एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है और मैं कह रहा हूँ ये रिएक्टिव पावर कैसी हो इस पे डिपेंड हो, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्योंकि लोड ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोड इज चेंजिंग, तो P इज चेंजिंग, Q इज चेंजिंग, Q2 and Q2 इज चेंजिंग एंड दिस QC भी अकॉर्डिंग टू दैट। तो हम तक क्या चाहते हैं, लोड हमारा रिएक्टिव पावर जो कैपेसिटर का है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, लेकिन आपने बताया रिएक्टिव पावर कैपेसिटेंस का एक फिक्स वैल्यू होती है। तो हाउ टू बी डन, कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? So the capacitor fixed value of capacitor cannot supply the very reactive power. That's why we connect the inductance in parallel with the capacitance, and inductance is varied, and that is called the SVC, static VAR compensation. तो न्यू डिवाइस क्या होगा, कैपेसिटेंस के साथ में पैरेलल में एक इंडक्टेंस कनेक्ट करते हैं और इंडक्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर। तो इफ वी डू दैट मींस वी कैन कंटिन्यूसली वेरी द रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर कंटिन्यूसली वेरी करते रहेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो फायरिंग एंगल शुड भी, फायरिंग एंगल कैसा होना चाहिए, फायरिंग एंगल शुड बी अकॉर्डिंग टू द P2 and Q2, मतलब P2 और Q2 मेजर होता है लोड पे कितना तोड़ रहा है उसको सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा किसका, इंडक्टेंस का। दैट्स व्हाई वी सप्लाई द वेरिएबल रिएक्टिव पावर। इन दैट वे we can have the constant voltage of the system. Okay, any question of नहीं बोल के और फिर लेंगे भाई, सब सिस्टम भाई। तो this was about the यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह बनेगा। आप ये जो जितने फॉर्मूलाज हैं इस फॉर्मूला को याद रखिए, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। So now you see there are few methods of maintaining the constant voltage: shunt compensation, series compensation, excitation we already described, shunt compensation we have just described, the rest will be described later. Okay, पूछना है कुछ इसमें? Thank you. थैंक यू सर।